हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। माय नेम इज़ आशीष गर्ग और हमेशा की तरह आपके लिए लेके आया हूँ ये सेशन जिसमें हम करेंगे प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चंस की जो आपकी प्रिपरेशन फॉर लॉ को बना देगा एकदम ज़ोरदार। तो इसीलिए फटाफट से जुड़ जाइए हमारे साथ, आइए और स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन को। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सारे के सारे लोग सेशन को और चलते हैं आगे फटाफट से। चलिए, हेलो अफशा, हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द सेशन बेटा। ठीक है, आज तो टी शर्ट देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सफ़ेदी की चमकार। ठीक है ना, बिल्कुल सच में ऐसा ही लग रहा है जैसे अभी यहाँ से जो ना ऐसे जाएगा करके कहेंगे देखिए इसकी टी शर्ट मेरी टी शर्ट से ज़्यादा सफ़ेद कैसे है ना। बिल्कुल, चलो गुड आफ्टरनून गौरी, गुड आफ्टरनून मानस, वेलकम टू द सेशन। आ जाइए फटाफट से लोग और शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो ये है आज का पैसेज, ये पढ़ेंगे आज का पैसेज, देखते हैं इस पैसेज में क्या है, किस तरीके से करना है इसे। ठीक है, तो वो हम करेंगे। थैंक यू सो मच गौरी, थैंक यू सो मच। और राइट, चलिए तो पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं पैसेज की। इफ़ यू आर अ पोएट, ठीक है आगे पढ़ते हैं। इफ़ यू आर अ पोएट यू विल सी क्लियरली दैट देयर इज़ अ क्लाउड फ्लोटिंग इन दिस शीट ऑफ पेपर. Without a cloud, there will be no rain. Without rain, the trees cannot grow. And without trees, we cannot make paper. The cloud is essential for the paper to exist. If the cloud is not here, the sheet of paper cannot be here either. So we can say that the cloud and the paper inter-are. Okay? If we look into this sheet of paper even more deeply, we can see the sunshine in it. If the sunshine is not there, the forest cannot grow. In fact, nothing can grow. Even we cannot grow without sunshine. And so we know that the sunshine is also in this sheet of paper. The paper and the sunshine inter-are. And if we continue to look, we can see the logger who cut the tree and brought it to the mill to be transformed into paper. And we see the wheat. We know that the logger cannot exist without his daily bread, and therefore wheat that became his bread is also in this sheet of paper. And the logger's father and mother are in it too. When we look in this way, we see that without all these things, this sheet of paper cannot exist. Looking more deeply, we can see we are in it too. This is not difficult to see because when we look at a sheet of paper, the sheet of paper is part of our perception. Your mind is in here and mine is also. So we can say that everything is in here with this sheet of paper. You cannot point out one thing that is not here. Time, space, the earth, the rain, the minerals in the soil, the sunshine, the cloud, the river, the heat. Everything coexists with this sheet of paper. This is why I think the word inter should be in the dictionary. To be is to interbe. You cannot just be by yourself alone. You have to interbe with every other thing. This sheet of paper is because everything else is. What a wonderful passage, first of all. What a wonderful passage. So, I mean, this is what the reality of life is, at least in this scenario right now. The world is going through this pandemic and everybody is trying, to build up, and they're just saying that, okay, I'm only concerned about myself. But we are not alone. It's a society, it's a group of people, and in everything is dependent on something or the other, and that is what is there. And there's such a beautiful writing, first of all, it is there. So amazing. Nisha, good afternoon, Sarji. Good afternoon, Ji Nisha. All right, Afsha, new t-shirt of Adda. Yes, it is the new t-shirt of Adda. This is the new logo that I'm wearing. All right, so that is there. And yeah, so you you will be seeing me in different shades, all right, in coming days also. So that's not a problem. Mohammed Abbas is saying good afternoon, very good afternoon. Welcome to the session. So indeed, it's a very, very good passage. It's a very thought-provoking passage, and these are the passages that you can expect in your CLAT paper also. So that is there. It's like good, it's nice, right, when you see this particular passage.
let's go to the question first. The first question says a poet sees a cloud in a sheet of paper as. अब भाई cloud दिखाई दिया उनको एक पेपर में, तो वो क्यों दिखाई दिया? Why? He or she is very creative, that's why. He or she loves nature. He or she writes poetry on paper. He or she sees the universe as a single entity. Now, अगर हम ये देख रहे हैं that उसने एक पेपर को लेके he took this paper and paper के अंदर he saw clouds, he saw rain, he saw perception, people, food, everything was there. तो in totality ये सारी की सारी चीज़ें comes under what? Comes under what? बताओ. What is that one thing that brings it? So it's the entire universe that possibly we are looking into this. So therefore a poet sees a cloud in a sheet of paper as the universe as a single entity, and therefore D is the correct answer. D is the correct answer. D is the correct answer. Absolutely correct hai. Let's go to the next question, and the next question says a cloud and the paper inter are means. What do you mean by this term inter are? That means a cloud and the paper. So we can say that they coexist. They coexist. इसी के ऊपर पूरा का पूरा पैसेज चल रहा है on coexistence. So if it is on coexistence, that means they are interrelated. They are interrelated. Yes or no? And if they are interrelated, then let's see which. Both are very important. No. Both exist because of the other, so they are interrelated. ये देखिए directly answer दे रखा है आपको. So the correct answer is B. The correct answer is B. Therefore, question number 1 and question number 2 easy question. ठीक है, 30-second questions हैं ये दोनों के दोनों, and you can आराम से do it. आराम से do it. All right, I can see that there is some problem in YouTube, I think, because of which you guys are not able to chat. I don't know why. चलो, anyway, देखते हैं, आगे चलते हैं. Let's go to question number 3, sorry. Why can't the logger exist without his bread? Why can't the logger exist without the bread? Like, see, he will die without food. He can't grow wheat. Without cutting trees, he can't earn money. Can't buy his meals, of course. So why can't the logger exist without his bread? ठीक है, तो क्यों नहीं हो पाएगा ये? Why? So the clearly, if you go and see here, and when we are talking about the logger, and if we continue to look, we can see the logger who cut the tree and brought it to the mill to be transformed into paper, and we see the wheat. We know that the logger cannot exist without his daily bread, and therefore the wheat that become his bread is also in this sheet of paper. So we see wheat. Now for wheat, he requires, जब इसको चाहिए wheat, तो क्या चाहिए होगा इसे? He needs to earn money. So why can't the logger exist without his bread? Because he has to stay. He has to stay alive. ठीक है, उसको जिंदा रहना है. और without cutting trees, उसको पैसा नहीं मिलेगा. So without cutting trees, he can't earn money. Can't buy his meals. So वो exist ही नहीं कर पाएगा. Therefore the answer is C. Therefore the answer is C. ठीक है, this is question number 3. Question number 4 says the theme of the comprehension is. Theme क्या है comprehension की? जो आपने पढ़ा passage, उसकी comprehension की theme क्या है? So clearly हमने क्या बोला? उसकी जो theme है is, हमने 2 शब्द यहाँ पर देखे थे. One was inter R, ठीक है, and the other was inter B. So if you go back to the passage and you read towards the end, you cannot point out one thing that it is not here, time, space, whatever, x, y, z thing. Everything coexists with his sheet of paper. This is why I think the word inter B should be in dictionary. To be is to be inter B. You cannot just be by yourself alone. You have to be to inter B with every other thing. This sheet of paper is because everything else is. ये इसलिए है ये पेपर इसलिए है क्योंकि बाकी सारी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं. तो आप इसमें अगर चलेंगे तो ये आप आसानी से हटा सकते हैं. डोंट हार्म एनीबडी, ये भी हटा सकते हैं. अब आपके पास बचता है ए और सी. ए और सी में क्या है? एवरीथिंग कोएग्जिस्ट इन नेचर, इंटर आर एंड इंटर बी. इसमें से अब आंसर कौन सा होगा?
इनमें से अब आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन और सी? दिस आई वॉन्ट यू टू कॉमेंट बिलो, कॉमेंट बिलो in the comment section, comment section. ठीक है, I will wait for this answer. Let's see, because I'm not able to see your chat right now. So but you will be saying and you will be writing it in the comment box so that I get to know that out of these two which is the correct answer. Let's go to the next passage, and the next passage says, Dr. S. Radhakrishnan, the illustrious philosopher, statesman of India, was one of the greatest sons of our motherland. He cautioned the world against the domination of science in society. It is erroneous to claim that scientific knowledge would bring with it perpetual progress and a steady improvement in human relations. The recent period of great scientific achievement has also increased human misery. 2 world wars, concentration camps, atomic destruction, Cold War, deadly wars in the Middle East and the Persian Gulf at many other places in the world. Growth in human wisdom has not been commensurate with the increase in scientific knowledge and power. The fear of universal destruction hangs over the world. There is a feeling of disenchantment, anxiety and even despair. Science has failed to liberate man from the tyranny of his own nature. Mankind is passing through a critical period, and an education of the human spirit has become essential. In order to remake society, man has to remake himself. If humanity is to survive, man just integrate his knowledge with a social responsibility. Now this particular small passage that is there, this small passage first of all has some vocabulary. If you don't understand this vocabulary, अगर आपको ये words नहीं आते हैं, then it will be difficult for you to understand this. Words like commensurate, disenchantment, ऊपर भी मैंने पढ़ा था, यहाँ पे erroneous, perpetual, ठीक है ना, ये सारे के सारे words वो हैं, misery, tyranny, राइट. सो ये सारे वर्ड्स वो हैं जो आपको अगर समझ नहीं आए तो ये पैसेज को समझना थोड़ा सा आपके लिए क्या होगा, मुश्किल हो सकता है. बट अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें एंड वी गो टू द क्वेश्चन, तो आप आसानी से इसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन से ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन थ्रू बैकवर्ड इंटीग्रेशन. जैसे डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैज़, अब ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं, these are kind of open-ended. These are open-ended questions. Why these are open-ended questions? Because these are open-ended questions because इसके आगे हमें नहीं पता ना कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैज़ व्हाट, किस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन है, ये अभी हमें नहीं पता, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर अस टू आंसर. तो यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने क्या किया. तो इफ यू गो बैक एंड सी, सो ही हैज डन व्हाट, ही हैज क्लियरली, यहाँ पर अगर देखें, काउंसिल दैट प्रीपोंडरेंस ऑफ साइंस इन लाइफ डज नॉट नेसेसरली जनरेट हैप्पीनेस. अगर हम यहाँ देखें तो उन्हें क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है ही कॉशन द वर्ल्ड अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ साइंस इन सोसाइटी. प्रीपोंडरेंस का उन्होंने चीज एग्जाम्पल दिया है. इट इज एरनियस, एरनियस का मतलब होता है इट इज गलत, एरर, ठीक है. टू क्लेम दैट साइंटिफिक नॉलेज वुड ब्रिंग with it perpetual progress and steady improvement in human relations. The recent period of great scientific achievement has also increased human misery. उन्होंने बोला कि भैया जो ये डेवलपमेंट हो रहा है इससे ज़रूरी नहीं है कि खुशी ही आएगी, इससे मिजरी भी आई है, इससे मिजरी भी आई है. So if you go back, so therefore the correct answer would be D. The correct answer would be D. ठीक है. Let's go to the next question. The next question says, the recent past of tremendous scientific progress has done what? Recent past जो अभी अभी हुआ है, ठीक है, उसने क्या कर दिया है, उसने आपके tremendous scientific progress ने recently अगर हम देखें, so what has it done? It has done that जो सोचने की जो शक्ति होती है, यहाँ देखिए, growth in human wisdom has not been commensurate with the increase of scientific knowledge and power. This is question number 2. So
हैज नॉट बीन कमेंसुरेट मतलब हैज नॉट बीन एबल टू गो विद इट. कमेंसुरेट का मतलब होता है कंधे से कंधा मिला के चलना, बी एट पार विद इट. देयरफॉर फ्रॉम हियर इफ यू आंसर क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो डी. Question number 2 is also D. I'm not able to see your comment, but I'm sure that you guys have understood this particular question कि इसको आंसर कैसे करना था. Let's go to question number next one. Man is despaired of science because, ठीक है, man is despaired total. अब उन्हें क्या किया है? The fear of universal destruction hangs over the world. There is a feeling of disenchantment, anxiety and even despair. क्यों है? क्योंकि जो इंसान है उसने पूरी की पूरी चीज़ों को डिस्ट्रक्शन और उससे कर दिया है. देयर इज अ काइंड ऑफ अ नाइटमेयर जो उन्होंने लिखा है ऑफ टोटल एनाइलेशन. एनाइलेशन इज रिवेंज. एनाइलेशन इज व्हेन यू आर नॉट इन अ गुड relation, always fighting in such a situation. So therefore the correct answer is D, written underneath. उसके नीचे लिखा था, बहुत easy question था, आसानी से आप इसको कर सकते थे. Then the next question is, man can save humanity only if he. Man ह्यूमैनिटी इसको कैसे सेव कर सकता है? हाउ कैन ही सेव? ही कैन ओनली सेव, अगर देखो, मैनकाइंड इज पासिंग थ्रू अ क्रिटिकल पीरियड एंड एजुकेशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट हैज बिकम इसेंशियल. इन ऑर्डर टू रीमेक सोसाइटी, मैन हैज टू रीमेक himself. Therefore, if you go to this question, it says what? It says, आसानी से, brings about an internal transformation in self. Therefore, the correct answer is B, towards the last few lines of the passage. Last few lines of the passage, and you can find it. Let's go to the next question, and the next question says, in this passage the writer has tried to show that. राइटर ने क्या बताने की कोशिश करी है इस पैसेज के थ्रू? ये चीज आपको बतानी है. and this question you will answer in the comment box. In the comment box. All right, this is what you need to do. This is what you need to do. So in this passage the writer has tried to show that. क्या दिखाने की कोशिश करी और क्यों लिखा गया है ये पैसेज, ये आपको बताना है. क्या वो है that science is the only savior that shall lead humanity forward? Science can bring about an end to all the wars. Social change comes with an advancement of science, or human wisdom must grow proportionately with growth of knowledge to evolve a creative integration to help mankind. Out of these 4 options, कौन सा ऑप्शन है? कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे बताएंगे. आई विल वेट फॉर इट. ठीक है, तो आपका जो आरसी है, आरसी में आपको यही करना है. इस तरीके से आपको पैसेज को पढ़ना है. जो आप स्ट्रैटेजीज हैं वो लगा सकते हैं. या तो यू कैन यूज क्यूपी और यू कैन यूज पीक्यू. दैट इज पहले क्वेश्चन फिर पैसेज, या पहले पैसेज फिर क्वेश्चन. इसके बारे में हम अगले सेशन में और डिटेल में बात करेंगे कि ये जो टेक्निक होती है, इससे कौन सी टेक्निक से क्या फ़ायदा होता है, ये हम ज़रूर बात करेंगे अगले सेशन में. तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ. और हमारा एक नया बैच है जो क्लैट और एलेट की तैयारी के लिए ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है. जाइए, लगाइए कोड Y468S और जुड़ जाइए हमारे साथ. मैं आपको पढ़ाऊँगा इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग. लेके चलेंगे आपकी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे. ठीक है, और आपका सपने को पूरा करने में पूरी कोशिश करेंगे, जो कि है आई एम श्योर NLU में जाने का. तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त मेंटोर आशीष गर्ग को इजाज़त. मिलूंगा अगले सेशन में बहुत जल्द. टेक केयर, बाय बाय, सी यू.